Hi dear students, this is me Ishfaq Riaz. Today we are going to revise the chapter algebraic expressions in one shot. I mean revision at a glance, right? So in algebraic expressions, what we discussed first was constant. Do you remember what is constant? Fixed value does not It change. has a fixed value, right? Yes, sir. So its value does not change during mathematical operations, right? Yes, So sir. we denote the constants by we have 1, 2, 3. I mean these numbers, they are constants, they have a fixed value. Also, you know this pi, its approximate value is 22 by 7, or you can say it is 3.14. Its value is also fixed. So we say that this is a constant, right? Yes, sir. Having fixed value. After this, what we discussed was variable. So variable is basically their value changes. Their value changes during mathematical operations, right? Yes. So we denote the variables by x, y, z, or you can denote them by p, q, r, right? Yes, sir. So variable is that quantity whose value changes during a mathematical operation, right? Yes, So we sir. denote them by x, y, z, or p, q, r. I mean these letters, right? Now, if we combine this constant and variable, for example, if we have this 3x, what we get is a term, right? Yes, sir. We are getting this or not? So term is basically a combination of a variable and a constant. You can also have terms like this 4x square yz. This is also a term, right? Yes, sir. Now here 3 is the coefficient of x, right? Yes, sir. This 4 is the coefficient of x square yz, right? Yes, so sir. this is basically terms. Now when we add or subtract terms, we get an expression, right? Yes, so sir. what is basically an expression? It is basically when terms are added or subtracted, right? Yes, so sir. I can write it here. Let it be 4x square plus 3x plus 2. So we combine the terms here, we add them here to get an expression. So this is an expression having how many terms? 3 terms. This 4x square is one term, this 3x is one term, and 2 is one term, right? Yes, so sir. this Yes, sir. algebraic expression has 3 terms, right? Yes, so sir. this is constant having fixed value, Very variable whose value changes during mathematical operation, and terms are formed from constants and variables, and when we add or subtract the terms we get what is called an algebraic expression. Now if an algebraic expression has one term, we call it as monomial. Yaad hai na? Yes, sir. So what is monomial? It is that algebraic expression having only one One term. single term. For example, this x is an example of monomial, right? Yes, sir. Yeah, x square yz. It is also an example of a monomial. This 2 or 1000, these are the examples of monomials, right? Yes, sir. Now, if an algebraic expression has 2 terms, we call it as binomial. Bi means 2, mono means 1, bi means 2. So this algebraic expression has 2 terms, right? Yes, sir. Now, remember, there is always plus or minus between the terms, right? Yes, so sir. in a binomial, for example, this is 3x square plus 2. This is an example of a binomial. We have also this 3x plus 1. This is also an example of a binomial, or I can write it here. This x, y, z minus 1. It is also an example of a binomial, right? Yes, Now, sir. if an algebraic expression has 3 terms, we call it as trinomial. Yaad hai na? Yes, sir. So trinomial. In trinomial we have 3 Three terms terms. combined by plus or minus, right? Yes, sir. So this is x plus y plus z. It is an example of a trinomial. Now, if an algebraic expression has more than 3 terms, we call it as polynomial. Yaad hai na? Yes, sir. Polynomial. Poly means many. We can also call this trinomial as polynomial because this is one type of polynomial having 3 terms, right? Yes, now, sir. if we have an algebraic expression having more than 3 terms, we call it as polynomial. For example, this is 4x cubed plus 3x square plus 2x minus 1. This algebraic expression has 4 terms, we call it as
पॉलिनोमियल। याद है ना? Yes, sir. यहाँ तक आपको याद रह गया ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस वेरी एक्सप्रेशन, let it be 4x square plus 2. This is an algebraic expression. याद है ना? Yes, sir. आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 वेरी नाइस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल। जरा मुझे बता कौन कौन सी टर्म है इसमें? 4x स्क्वायर है और प्लस 2, ठीक है ना? इसमें Yes. 2 टर्म्स है। जरा मुझे बताओ आप ये टर्म्स फैक्टर्स मुझे बताओ इस वाली टर्म की, यानी ये जो टर्म है 4x स्क्वायर किस किस की बनी हुई है? एक तो 4 की और 2x है इसमें, x, x. So 4x and x are the factors of this very term. 2 it is as it is, right? Yes, sir. So this is an algebraic expression having 2 terms. 4x square plus 2 is an algebraic expression, rather a binomial here. So there are 2 terms, this is 4x square and 2. The factors of 4x square are 4x and x. 2 is as it is, right? Okay. Now, one more expression I will write here. See, let me write here. This is 4xy square z plus 3x square plus 2. This is also an algebraic expression having how many terms? How many terms are there in this expression? 3 terms. जरा बताओ, नाम उनका बताओ। 4xy square z, हाँ, 3x square और 2, ये 3 terms इस algebraic expression में, ठीक है ना? आप मुझे factors बताओ इस वाले टर्म में। 4 ये 4x y and z, these are the factors of this very term. Now what about this 3x and x? What about this 2? So these are the factors of this very algebraic expression. So up to this we discussed constant, variable, term, expression, algebraic expression, monomial, binomial, trinomial, polynomial and factors of a given polynomial or algebraic expression. उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, like and unlike terms. Let me elaborate those 2 terms here. So let me write here like terms. आप मुझे बता सकते हो like terms हम किनको करेंगे? Yes, sir. Some variable power same. Variable same, याद है ना? Yes, sir. Power same, I mean degree. You are getting it? Coefficient need not be same. Yes, You sir. are getting it or not? Coefficient need not be same. For example, I have 2 terms here. Let me write minus 3x square and 4x square. I have 2 terms here. X here. यहाँ पे भी वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, so वेरिएबल सेम, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। Yes, sir. जरा देखो वेरिएबल का पावर, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो पावर इज आल्सो सेम। सो दीज 2 टर्म्स आर सेड टू बी लाइक टर्म्स। यहाँ पे कोफिशिएंट है -3, यहाँ पे कोफिशिएंट है -4। कोफिशिएंट नीड नॉट बी सेम। यू आर गेटिंग दिस? Yes, सो sir. दीज 2 टर्म्स आर लाइक। टू वन मोर एग्जांपल, दिस इज 3xy square and -xy square. यहाँ पे मुझे बताओ आप, what is the coefficient of xy square? 3. यहाँ पे coefficient क्या है? -1. It will not be same. जरा वेरिएबल्स की ओर आते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y square है, यहाँ पे भी y square है, तो ये 2 टर्म्स जो है ये भी लाइक टर्म्स है। जरा ये बताओ आप, x square y xy square, यहाँ पे x का पावर क्या है? 2, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये 2 टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। बात समझ आ रही Yes, है? sir. So these are unlike terms. And remember one rule that only like terms can be added and subtracted. ये रूल आपको याद है ना? Yes, sir. Only like terms can be, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा ये रूल, only Like like terms can be added can be added And subtracted. as well as Subtracted. subtracted. ये बात आपको याद रखनी है, as well as
सबट्रैक्टर। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्म है x, दूसरी टर्म है 3x, यहाँ पे भी वेरिएबल x, यहाँ पे भी वेरिएबल x, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। सो ये लाइक टर्म्स है, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। x प्लस 3x जरा बता किसके बराबर निकलेगा? 4x 4x। वेरी नाइस, यू आर गेटिंग दिस, गुड। जरा ये बता 3x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y जरा बता किसके बराबर निकलेगा? 5x स्क्वायर y। ये हुई एडिशन की बात इनके साथ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जरा हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मुझे बता 3x माइनस x किसके बराबर निकलेगा? 2x नाइस, वेरी गुड। जरा ये बता 3x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y, ये 2x very nice, 2x square y. You are getting this? Yes. So this is how do we add and subtract like terms. उसके बाद लास्ट में हमने इसी चैप्टर में एक वैल्यू निकाला था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल x हो, y हो या m हो, हमने वैल्यू निकाला था एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जरा आप एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मुझे बता। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 2। जहां जहां भी आप x देखोगे उसके बाद क्या लिखोगे आप? 2। तो मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूंगा। So this is 3x square plus x minus 2। जरा खुद बता किसके बराबर निकलेगा? 3 as it is। x के बाद क्या लिखूंगा? 2 square plus 2 minus 2। बात समझ आ रही है? Yes, क्या कर रहे हैं हम? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हम एक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 2 square, 2 2 जा 4, ये है प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। 4 3 जा 12। So 12 is the value of this very algebraic expression when you put x is equal to 2। लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल एट m is equal to -1, इस वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मुझे आप वैल्यू निकालते दे दो। फॉर एग्जांपल ये है m क्यूब प्लस m माइनस 2, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? Yes, sir. तो m के बदले में क्या लिखूंगा? -1। सो दिस इज -1 क्यूब, हाँ, प्लस m के बदले क्या लिखूंगा? -1। सो -2 इज इट इज। बात समझ आ रही है ना? जरा ये बताइए किसके बराबर निकलेगा? -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये -1 निकलेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सॉरी -1 निकलेगा और -2 इज इट इज। जरा मुझे ये बताइए किसके बराबर निकलेगा? -1 और -2, इसका आंसर मुझे बताओ आप। Very nice, -4। So -4 is the value of this very algebraic expression when we substitute m is equal to -1। So dear students, in this chapter we discussed what is constant, what is variable, how do we get a particular term, and when we add or subtract terms we get an algebraic expression. Right now you know about the coefficient and the factors of an algebraic expression. After this we discussed monomial, binomial and trinomial, अगर आपको याद होगा, and polynomial as well. Then we discussed like and unlike terms, and in this very chapter we solved some of the questions related to addition and subtraction of the algebraic expressions and how to get a value of an algebraic expression. So this was all for today's class. We'll be meeting in the next class. Till then, Khuda Hafiz. Thank you very much.